Good morning, everybody. Chalo, online students, please give me a hi in the chat box. Everybody, a hi in the chat box. We're starting. So today we are going to do the Contract Act, Indian Contract Act 1872, starting with unit number 1, Nature of Contracts. Online students, come on, a hi in the chat box. Hello. Hi, everybody. 1.2. All set? Sure, perfect. Let's start. Indian Contract Act, which year? 1872. Yes. So what is the sequence for a contract? First, what needs to take place? Offer, or you call it as a proposal. Proposal में क्या add करेंगे? Acceptance. Proposal को जब acceptance मिलेगा तो क्या बनेगा? Agreement. Agreement. और agreement को जब dash होता है तो contract. Right? So you need a proposal for acceptance, then agreement for legal enforceability, and finally it makes up a contract. Perfect. Now, agreement. Agreement is defined as every promise and set of promises forming consideration for each other. So every promise and set of promise forming consideration for each other is called as agreement. And what is a promise? What is a promise? When one person to whom the proposal is made signifies his acceptance thereto, it is said that proposal is accepted. Yes, and this proposal, when accepted, becomes a promise. Clear? So, agreement could be one promise or a set of promises forming consideration for each other. So, even consideration is an important element to make up a contract. What is the meaning of enforceability of law? Law का control. Enforceability of law का मतलब? Backed by law. Backed by law. Correct. So when a particular agreement is backed by law or gets a legal obligation, then it is called as it is enforceable by law. So a simple example. Suppose if your father promises you that this year you pass your foundation exams and I'll give you a क्या चाहिए? Bike. चाहिए. Okay, so I'll give you a bike. अर्नब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया. पापा ने बोला बाइक देनी तो थी, बट ऐसा लग रहा है तेरा इंटर का तेरा ध्यान नहीं है अच्छा पढ़ाई में, तो पहले तो इंटर पास हो जा फिर तुझे बाइक देंगे. अब अर्नब को आया गुस्सा, हो गया केस फाइल करने पापा के आगे. कोर्ट क्या बोलेगा? घर जाओ. So court बोलेगा घर जाओ, right? Because there is no enforceability of law. You cannot file a case in this particular case. Yes, but अगर अर्नब ने मान लो कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर की थी, yes, क्या ऑर्डर कर रहा है? बुक्स. So एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन उसने कुछ बुक्स ऑर्डर किए. एग्जाम का टाइम आ गया, अभी तक बुक्स नहीं आए हैं, 1 महीना हो गया था ऑर्डर करके, उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर डिलीवरी देंगे. अब अर्नब की एग्जाम हुई, अच्छे मार्क्स नहीं मिले, गुस्सा आया अर्नब को कि बुक्स नहीं आए इसीलिए अच्छे मार्क्स नहीं मिले. कैन ही फाइल अ केस? यस, ही कैन फाइल अ केस ऑन Amazon कि आपने डिलीवरी टाइम से नहीं दी, नॉट बिकॉज़ ही प्लान, बट क्योंकि आपने डिलीवरी टाइम पे नहीं दी इसीलिए उसको केस फाइल कर सकता है. So for this particular contract, is there a legal enforceability? Yes. The court इसको यहाँ पे नहीं बोलेगा घर जा, है ना? So court will consider this case and give justice to Arnab. So there is legal enforceability in this particular case. तो जब contract कब कहेंगे? जब agreement को क्या होता है? Legal enforceability. Correct? So agreement basically कोई भी promise हो सकता है. तो जो पापा ने अर्नब को promise किया था, was that an agreement? Yes. जो Amazon ने अर्नब को प्रॉमिस किया था, was that an agreement? Yes. But contract इसमें से कौन सा था?
charter. Correct? The former one was not a contract. Perfect. Now, let's see the difference between agreement and contract. Agreement सब साथ में बोलेंगे, meaning every promise and set of promises forming consideration for each other. What is the equation? Dash plus dash, offer plus acceptance. Contract का meaning agreement enforceable by law. What is the equation? Agreement plus legal enforceability. Perfect. Then scope. What is wider? Agreement is wider or contract? Agreement is wider क्योंकि हर कोई proposal when accepted becomes the agreement. Need not have legal enforceability or may have legal enforceability. So it's wider. But contract सिर्फ वही agreements जिनको legal enforceability होगी will become a contract. Correct? So yes, here it is wider. It has both legal and social obligations, and in case of a contract, it is narrower. Only legal obligations are considered. Then legal obligation. What creates a legal obligation out of these two? Contract. Both. Even agreement may create a legal obligation, dear students. Yes. So it may or may not create legal obligations. So agreement may or may not create legal obligation. Does not always grants rights to the parties. But contract, it will always need to have a legal obligation. Necessarily creates legal obligation. It always grants rights to every party. So first case में Arnav did not have a right against his father, but in second case he had a right. So first case may or may not have a right, agreement. Second case will have a right, contract. Nature. All agreements are contracts. Why? Legal obligation. So one word answer, there is not every agreement has legal obligation. Therefore, not every agreement will be a contract. But every contract needs to be agreement. Yes. So we see the series agreement के बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. उसके इक्वेशन में ही है डैश प्लस डैश अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी. तो बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. Perfect. Now, so there is a question which generally comes that explain all agreements are not contracts, but all contracts are agreements. So you need to explain here on the basis of legal obligation. है ना? कि not every agreement may have a legal obligation, but a contract necessarily needs to have a legal obligation. Write the definition, write equations, give examples. Okay? Now, essentials of a valid contract. Do they have acronym here? Yes. And PC. Perfect. So PC square entered into a legal contract. Correct. Legal contract and painted. Corrected. Now, P for possibility of performance. Let's discuss it here only. A contract should have possibility of performance. अगर Amazon आपको promise कर रहा है, will get you stars, will get you moon, and नहीं लाया, अर्नव ने केस फाइल किया, चलेगा? वापस कोर्ट क्या बोलेगा? Exactly. So here, because there is no legal enforceability, because there is no contract, and because why is it not a contract? Because not possible to perform. ये possible ही नहीं है, कैसे perform करेंगे, है ना? So अर्नव को समझना चाहिए था ऑर्डर करते वक्त, बराबर? So no possibility of performance. आप यहाँ पर examples दोगे, so पहले तो simple 2 लाइन में explain करोगे that the contract needs to have possibility of performance. Without that, it cannot be a contract. And then second line example आप दोगे that getting stars and moon, या फिर discovering magic by treasure. Yes, all of these examples you can give. Just give me a second. Huh? YouTube पे चल रहा है. हाँ, बोल. कल ना
बीच में आ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं आपके चलता है थोड़ा ब्रेक में हाँ नहीं पॉज ही नहीं होता है अभी भी ये सारा यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होता है तेरा पर मैसेज करेगा क्या क्या नहीं पता अच्छा वो सेट ठीक ठीक है थोड़ा ब्रेक Okay, possibility of performance. So every contract must have possibility of performance. उसके बिना no use, right? 1 second. Next, C square. Certainty of meaning. क्या point है certainty of meaning में? Yes, it should be certain, absolute, and not vague. It should be understandable. जो भी contract हो रहा है, वो सामने वाले पार्टी को उसका correct meaning पहुंचना चाहिए. Yes, अगर कुछ मैं बोल रही हूँ और सामने वाला अगर उसे गलत meaning में ले रहा है, then in that case it cannot be a contract. So there has to be certainty of meaning, and the meaning should not be vague. But the contract should not be vague. Can you give an example here? Certainty of meaning? Yes. So if I contract with you to give you 100 tons of oil, I need to specify which oil. Otherwise, यहाँ पे confusion हो सकता है ना? Yes. So I need to specify which oil it is. Next, see, capability of the parties or capacity of the parties. Anything but. Who are the parties capable of entering into a contract? A major person, a person who is of sound mind, and person who is not disqualified from entering into a contract. Correct? उसी में आता है. Then, person who is major means what age? 18 plus. Then sound mind मतलब? Non-drunken, non-lunatic. Correct. He should not be drunk at that time. He should not be very ill. He got to be in his senses. And lastly, not disqualified from entering into a contract. Consequences, those who are not convicted by the court, not alien enemies, foreign diplomats, foreign sovereigns. Yes, correct. All of these people are disqualified from entering into a contract. So other than these, everybody can enter into a contract. Then next point, L square है legal obligation and lawful consideration. Legal obligation. Every contract should create legal obligation. If this is missing, then it cannot be a contract. We had seen a case law here. Do you remember? Which case law? Balfour versus Balfour. So wherein the husband had promised to give the wife a monthly, every month he would supply certain money to wife. But here he did not. So wife filed a case. Was that case having any legal enforceability? No, because it was not husband's legal obligation to give that money to wife. So legal obligation is contract में नहीं है. Balfour versus Balfour. That is why it is not a contract. Then next point is lawful object and lawful consideration. Contract का object कैसा होना चाहिए? Legal होना चाहिए, lawful होना चाहिए. A contract to do some illegal work or illegal, proposal. Will that be a contract? Not a contract. It will be a void contract. Yes, so if Arnav promises somebody that yes, काम हो जाएगा, kidnapping हो जाएगी. Yes, will that be a contract? No. Because the object of the contract is not lawful. या फिर अगर consideration भी lawful नहीं है, उस केस में भी contract क्या होगा?
void. Now, object and consideration, you can say it's interchangeable. Like suppose your object of the contract was kidnapping, right? And Arnab ka consideration. So like if I have given money for Arnab to do that job, then Arnab ka consideration क्या है यहाँ पर? To kidnap, right? Even that is unlawful. So object also and consideration also are the same. Both need to be lawful. Correct है? Then L square हो गया. Next is F square. क्या है? Free consent. Free consent से related 5 words. Coercion, uninfluence, fraud, misrepresentation, and mistake. A contract should be free from all of this: coercion, uninfluence, fraud, misrepresentation, mistake. Coercion, धोखा धोखा, Threatening threatening and committing to threaten. So threatening मतलब किसी को डराना, धमकाना, किसी के सर पे बंदूक रखना और उससे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा के लेना, that is called as coercion. Yes. या फिर unlawful detaining मतलब unlawful detaining किसी की प्रॉपर्टी हड़पना. Yes. आपकी unlawful detaining मतलब किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रखना. Yes. मतलब अगर सपोज आप किसी का बाइक खड़ा रहे और बोल रहे हो ये काम कर तभी देखो तेरी बाइक वापस देंगे. So that your is called as unlawful detaining because that's not your bike, you're taking somebody else's and you're going to detain it, keep it with you. Okay, so this is coercion. Undue influence, using dominance. Yes, using your dominance, taking undue advantage of your dominant position. That is important. See, being in a dominant position is not a problem, but taking undue advantage of the dominant position is a problem, and that is undue influence. So, if somebody is being in a dominant position, is trying to blackmail or trying to anyhow influence a person who is not in the dominant position, then in this case it will be undue influence and making them enter into a contract by that. Yes. So if I blackmail Arnav, yes. Suppose if I blackmail Arnav, so am I in the dominant position? Yes. Is Arnav in the dominant position? Yes. So here is there a relation? अच्छा तो dominant position में एक relation भी होना चाहिए दोनों में, तभी तो dominant position हो सकता है. Correct. So यहाँ पर if I force Arnav to do something, like if I force Arnav कि देखो इतने मार्क्स आए तो मेरे को कार देना पड़ेगा या ऐसा हुआ तो ऐसा करना पड़ेगा. So if I force Arnav to enter into any kind of contract, then in this case the contract will be void. It's not a legal contract. It's not a valid contract. So coercion हो गया. Undue influence, fraud. Obviously, कोई भी fraud से किया हुआ contract, धोखे से किया हुआ contract is going to be unlawful, not a valid contract. Then misrepresentation. Now, fraud is intentional and misrepresentation is unintentional. हो जाता है कभी-कभी. Yes. तो unintentionally किसी को फंसाना आपका मोटिव नहीं था, सिर्फ अपना काम करा के लेना was your motive. आप नहीं चाहते थे कोई और आपको पता भी नहीं था कि कोई इससे फंस जाएगा. So that is misrepresentation. Unintentionally trying to induce somebody to enter into a contract by unlawful means. So that is misrepresentation. Then finally mistake. गलती से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे, ना सामने वाला चाहता है ना आप चाहते हो to enter into that contract, then in that case the contract is going to be void. Free consent हो गया. So a contract should be free from coercion, uninfluence, fraud, misrepresentation and mistake. And और एक टर्म हमने फ्री कंसेंट में पढ़ा था, एक लैटिन टर्म कंसेंसस एट आइडल. इस टर्म का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स. So when a person is entering into a contract at the other party, their minds should meet on the same thing in the same sense. Yes, taking the same thing in the same sense. So like if I'm selling a car to Arnav, so I have मान लो 2 cars, one is red car and one is black car, and if I'm dealing, okay.
But if I'm dealing to enter into a contract, if I'm wanting to sell my red car to Arnav and Arnav is assuming that I'm selling my black car, then is there free consent here? Why? No meeting of minds, no consensus at either. So consent का मतलब होता है meeting of minds, consensus at either, taking the same thing in the same sense. Next, F for fulfillment of formalities. So when you enter into a contract, there are certain contracts where there are formalities required. If you do not complete the formalities, the contract will not be a valid contract. There are two cases here. First case, insurance contracts. In case of insurance contracts, the contracts need to be written format, compulsorily in a written format. Oral insurance contracts are not a valid insurance contracts. Yes, and second, contracts of immovable property. So in case of immovable property, registration of the property and making it in a written format is very, very important. Otherwise, it will not be a valid contract. Yes, तो ये दो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखने हैं, insurance contracts and immovable properties. Next, F हो गया. A for agreement होना चाहिए, और agreement होना चाहिए मतलब dash और dash होना चाहिए. Offer and acceptance. So there has to be offer from one party and acceptance from the other. अगर ऑफर ही नहीं है और अर्नव अगर एक्सेप्टेंस दे रहा है तो चलेगा क्या? किसी ने पूछा ही नहीं तो भी उसने बीच में बोल दिया तो चलेगा क्या? So there has to be a offer and a acceptance. Then only it will be a agreement. Next, I, intention to create. ऊपर legal obligation, अच्छा वो वहाँ पे नहीं था, legal object था. So we have covered up their point. Okay, intention to create legal obligation हमारा हो गया है. Balfour versus Balfour वहाँ पर case law important. Then N for not expressly declared as void. Which are the contracts which are expressly declared as void? Contract with the minor. Contract with the minor. Illegal. The contracts which are illegal against the public policy. Yes, all of these are expressly declared as void. ये start से ही they are void ab initio. From the very beginning they are void. You cannot enter into these contracts. So the contracts which are unlawful in nature, they are going to be compulsorily void. Also, there are certain contracts which are absolutely void, like restraint in trade, restraint in marriage. Yes, then legal restraint in the legal proceedings. Yes, all of these are purely void. So if you enter in these types of contracts, it's going to be a not a valid contract. Then T for case law. State of Gujarat versus Ramanlal S and Company. क्या कहा था इस केस लॉ में, क्या हुआ था, एनी आइडिया? सो रमनलाल एस कंपनी वाज अ पार्टनरशिप फर्म. तो यहाँ पर पार्टनर्स ने क्या किया था? ऑन लिक्विडेशन दे डिस्ट्रीब्यूटेड द एसेट्स अमंग themselves. यहाँ पर स्टेट ऑफ गुजरात आए, द वैट डिपार्टमेंट हैड कम एंड दे सेड दैट दिस इज अ sale. This is a sale by the partnership firm to the partners and they should pay sales tax. They should pay sales tax. But यहाँ पर actually partnership के owners कौन होते हैं? Partners. Partnership के assets किसको belong करते हैं? Partners. Then how come the buyer and seller be the same person? अपने assets उन्होंने खुद को बेचे, ऐसा थोड़ी ना होगा. Yes. So this was not a sale. There was only one party to the contract. So you require how many parties? Minimum 2 parties for entering into the contract. Yes? Clear hai sare points. Let's once again say all the points together. P for possibility of performance. C for possibility of meaning and capacity of the parties to contract. Then legal obligation and lawful consideration. Then F for fulfillment of certain formalities and B consent. A for agreement. N for not expressly declared as void. And T for learn है ये अच्छे से.
Now come to this table first before you go ahead. There is a question that comes in exam. Tell the essentials of a valid contract as per section 10 of the Indian Contract Act. इतना ही आता है. They don't ask you what are all of the essentials of a valid contract. They'll ask you what are the essentials of the valid contract as per section 10 of the Indian Contract Act. तो वहाँ पे सिर्फ 6 है. दिख रहा है आपको ये सारे 6? Agreement, free consent, competency of the parties, lawful consideration, legal object not expressly declared as void. तो ये 6 भी लिखे आने हैं, ठीक है? And mention नहीं किया तो सारे लिखे आने हैं, right? So mention नहीं किया तो these are extra elements. Though not given under section 10, but they are important. So two parties intention to create legal obligation, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance. तो आपको जो as per section 10 लिखना है वो एक बार बोलोगे. चलो, A for agreement, A for free consent, competency of parties, lawful consideration, legal object not expressly declared as void. So legal वाला word जो है वो पूरा है square. Yes, C एक ही है, F एक ही है, A है और N है. So एक F है, एक C है, बाकी दूसरे इसमें है और 2 लीगल वर्ड्स हैं. ठीक है, याद रखना. आगे जाएंगे. अच्छा, कंसिडरेशन का लैटिन टर्म Quid pro quo. Quid pro quo. लिख के आना. Now, types of contracts. Different types of contracts on the basis of enforceability, on the basis of formation, and on the basis of performance. सबसे पहले शुरू करेंगे on the basis of validity. पहला है valid contract. Valid contract is a contract that contains all the essential elements of a valid contract. तो अभी जो हमने सारे elements पढ़े, अगर वो किसी contract में present है, then it's a valid contract. Yes. Second, void contract. A contract which ceases to be enforceable by law is said to be, it becomes void when it ceases to be enforceable. और एक बार definition बोलेंगे. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. इसको हम ऐसे divide करते हैं. Contract which ceases to be enforceable. Ceases means stops. The contract which stops being enforceable by law. You understand enforceability now, right? So जो contract अब आगे enforce नहीं हो सकता, इसकी enforceability खत्म हो चुकी है, वो contract क्या होगा? But वो कौन से moment से void होगा? When it ceases to be enforceable. Correct. अब यहाँ से 2 meanings निकल आते हैं कि a contract can be void from the very beginning, that is called as void ab initio, या फिर a contract can become void in between of the contract, and that is called as supervening impossibility. तो अब beginning of the contract से ही अगर कोई contract void है, तो उसी moment से उसे void contract बुलाते हैं. सबसे best example is your unlawful contract. अगर कोई आप unlawful contract में enter करते हो, it is void ab initio. और ऐसा कोई contract जो बाद में void हो जाता है, तो वो start से तो valid होता है, but उस point से जब वो घटना हो जाती है या कोई ना कोई issue आ जाता है, उस point से it stops being enforceable और उसके बाद से हम उसे क्या बुलाएंगे? Void. Let's take an example. So now today we have contracted कि I will, मान लो मेरा sweet shop है, तो I have contracted that I will give you 100 kgs of sweets. Okay? After 10 days. So आज हमने ये contract किया. Is it a valid contract? Yes, it's a valid contract. Proposal है, acceptance है, consideration है, सब कुछ है, right? So it is a valid contract. अब 6 दिन बाद मेरे फैक्ट्री में आग लग गई या मेरे स्वीट शॉप में आग लग गई. There was a fire. Now can I perform the contract? तो 6 दिन बाद contract कैसा हो गया? Void. So definition देखना. A contract which
ceases to be enforceable. So at this point, it ceased to be enforceable. Shall be void when it ceases to be enforceable. तो इस moment से ही when it ceases to be enforceable का मतलब उसको इसी moment से void कहेंगे. इसके पहले से वो void नहीं था. तब तक वो तो enforceable था, valid था. Right? Easy. Now, example देखेंगे. Mr. X agrees to write a book with a publisher. After few days, X dies in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of performance of contract. अब थोड़ी ना X लिख पाएगा book. ऊपर बैठ के थोड़ी ना लिखेगा. Yes. Then A contracts with B, owner of the factory, to supply 10 tons of sugar. But before the supply is affected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes void. It may be added by way of clarification that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. So there can be no concept called as void contract. But just for the types of contracts के purpose के लिए, understanding purpose के लिए, उन्होंने उसे void contract बुलाया है. क्योंकि contract is something which is enforceable by law. But void is something which is not enforceable by law. So void contract, there cannot be a word. है ना? So it is going to be void agreement. Agreement चलेगा. It is a void agreement. Okay? Voidable contract. Let's see the definition. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. एक पार्टी के साइड से it is void. मतलब एक पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो enforceable by law है. So it is an agreement which is enforceable by law. It is enforceable, but only at the option of one or more parties, but not at the option of the other party. क्या एग्जाम्पल हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट का? बोलो. So, suppose there is party A and party B. Party B has a house which party A wants. So they go there with undue influence. They somehow convince them to sell them the house. Correct. Then party B files a case maybe, and then it comes to party B. They can still make the contract legal. They can still sell the house and ask for the money back, or they cannot. It's there. Correct. तो basically you can simply say आपके जो 5 elements है फ्री कंसेंट वाले, अगर उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें से सारे 5 नहीं 4 है मिस्टेक छोड़ के. So if the contract is by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, in this case the contract is going to be voidable. How? Let's see. So voidable में आपके पास चॉइस होता है. आपके पास चॉइस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कर सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो? void. अब किसके पास चॉइस है? लेट्स फाइंड आउट. तो सपोज एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है जिसने मिस्टर ए के सर पे बंदूक रखी है. ठीक है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए के सर पे बंदूक रखी है और उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन करने लगा है. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे लिखा था कि अब से मिस्टर ए का घर किसका? मिस्टर बी का, फॉर ₹1 कंसिडरेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पर मिस्टर ए के पास चॉइस होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो मिस्टर बी को चुपचाप घर दे दे. अब उस मोमेंट पे तो उसको वही करना पड़ेगा, राइट? तो लॉ मेकर्स इस मोमेंट की बात नहीं कर रहे. उस मोमेंट पे तो उसको पेपर साइन ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मर जाएगा, राइट? तो साइन ही करना पड़ेगा उसको. बट बाद में जब सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल हो जाते हैं और अगर मिस्टर ए केस फाइल नहीं करते हैं मिस्टर बी के अगेंस्ट, कंप्लेन नहीं करते हैं मिस्टर बी के अगेंस्ट, दैट मींस ही हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट. That means the contract is valid contract. But अगर A जाकर Mr. B के against case फाइल करता है, then it becomes a void contract. Void contract. तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे कहेंगे voidable. इसका जो आउटकम होगा
ये इधर क्या होगा, वैलिड या फिर void. So this is a voidable contract which is enforceable at the option of one party and not at the other, not at the option of the other party. So who has the option? Can you tell me, Mr. A or Mr. B? Mr. A के पास option होगा कि उसको valid करना है या. So there is only option with one party and that is the aggrieved party, that is Mr. A. So an agreement enforceable by law at the option of one party but not at the option of the other or others is known as a voidable contract. Definition याद रहेगा? Perfect. So in this case, the one party to an agreement is in the position or is legally entitled or authorized to avoid performing the part when the agreement is treated and becomes voidable. So other party can avoid his performance and make the contract void. Such a right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. And hence the other party has right to treat it as a voidable contract. So generally in चारों cases में contract कैसा होगा? Voidable. Easy? Let's see the difference between void contract. Meaning a contract ceases to be enforceable by law, becomes voidable when it ceases to be enforceable. So is it voidable? Agreement which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of the other or others is a voidable contract. Definition अच्छे से याद करना है कि कैसे भी करके exact lines में वहां पे आपको कोट करना है, यहाँ पे own words में मत जाना, है ना? Then cause contract might become void due to different causes. एक तो void ab initio हो सकता है या फिर बीच में कैसे वो void होगा? Change in law, change in circumstances. Yes, अगर ऐसा कुछ होता है तो contract void हो सकता है. So change in law का example plastic ban. Yes, so the government bought a plastic ban. उसके बाद से जो plastic sell करेगा, that's a void contract. Correct? So change in law, change in circumstances beyond the contemplation or beyond the control of the parties. Then voidable contract becomes voidable if the consent of the party was not free. So basically no free consent. Then performance of contract. Can a void contract be performed? No. A void contract cannot be performed. अब voidable में जो point है वो important है. If the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract. तो हमारा जो example था A और B का, तो if the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, ये लाइन का मतलब क्या होगा उस example के हिसाब से? A ने अगर रीजनेबल टाइम के अंदर अगर केस फाइल नहीं किया तो यहाँ तक क्लियर है, तो any party can sue the other for claiming the performance of the contract. Mr. B can sue A for the house and Mr. A can sue Mr. B for that 1 rupee consideration. So वो हो जाएगा valid contract and they both can sue each other if जो contract में लिखा है अगर वो perform नहीं हुआ तो. समझे? क्योंकि उसके बाद contract कैसा हो जाता है? Valid, है ना? अगर if he does not exercise the option then contract is valid and then both can sue each other for performance of the contract. याद रहेगा? वैसे के वैसा लिखना है. Then rights. A void contract does not grant any right to any party. कोई right नहीं मिलेगा. Correct. But in case of voidable contract, who has the right? The party whose consent was not free has the right to resign the contract. उसके पास option है, वो right है कि वो contract को void कर सकता है. Enforceability. Void contract cannot be enforced at all. But here, अब यहाँ पर अगर aggrieved party चाहे तो it can become a enforceable contract.
So yes, Soham, if it is enforced only at the option of the aggrieved party and not at the option of the other party. Yes. अब कोई भी डिफरेंस बिटवीन याद अच्छे से करने के लिए क्या लर्न करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ बेसिस अगर याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली अंदर भी याद आएगा. सो मीनिंग याद रखना है, कॉज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड एनफोर्सेबिलिटी. Did we make anything to this? Range of draft. Okay. Yeah. तूने बनाया हम? P for P for frame. P for performance of contract. R for rights. E for enforceability. C for M for meaning and C for cause. याद रहेगा? अब illegal contracts. It is a contract which law forbids. आप perform ही नहीं कर सकते, law allow ही नहीं करेगा, है ना? So it is a contract which law forbids to be made. The court will not enforce such a contract, but also the connected contracts. तो इससे connected contracts भी आप perform नहीं कर सकते. तो like suppose मैंने अर्नब को बोला किडनैप करना है. Yes, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी. अर्नब नाचने लगा. दाएं हाथ का खेले मांगे तो मैंने yes. और मैंने अब 1 करोड़ मेरे पास नहीं है, बैंक से लोन लिया है बोल कर कि मुझे किडनैपिंग के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए. Yes, बैंक ने पैसे दे दिए. So now बैंक का मैनेजर फ्रेंड था. So यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बैंक का लोन का, will it be enforceable? No, क्योंकि it is a side contract only. ये illegal contract जो है उसी का ये side contract है ना, तो ये भी enforceable नहीं हो सकता. Got the point? So both the contracts are not enforceable. So the court will not enforce such a contract, but also the connected contracts. All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Star mark this, इस पे भी question आता है. हमने ऊपर मैंने जब आपको void contract पढ़ाया, मैंने आपको 2 examples दिए. Yes, हमने कौन से 2 examples दिए थे? Fire in the factory वाला और एक कौन सा था? और एक कौन सा था? ठीक है, प्लास्टिक बैन आप ले सकते हो. या और एक ऊपर था ना, ऑथर डाइज, बुक का ऑथर डाइज. अब इन दोनों केसेस में कोई भी इलीगैलिटी थी? Was anything illegal but still they were void? Yes, but here illegal contracts are purely void. So all illegal contracts are going to be void, but not necessarily that all void contracts are also going to be illegal. तो आप ये examples देके explain वहाँ पर करना. तो ये they'll ask you explain this point. Okay, so here you'll give examples. Definition लिख के आना. Illegal is something which law forbids. And what is a void contract? इसका definition लिखोगे. Void contract can cause by any reason, not only illegality. It can be because of change in the circumstances. It can be because of change in law. It can be because of the death of the person. कोई भी चीज की वजह से void contract बन सकता है. Not necessarily illegality only. Examples लिखना and you'll give the final verdict. Then example, contracts that are opposed to public policy. Now there are going to be certain contracts opposed to public policy, yes, and are illegal in nature. So contracts that is immoral, opposed to public policy, or illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal agreement. Illegal contract क्यों नहीं बोला? Contract is something which needs to have legal enforceability. Does illegal contracts have legal enforceability? Anything that is illegal, does it have legal enforceability? How can you call it as illegal contract? It will be illegal agreement. So just like void contract doesn't exist, even illegal contract doesn't exist. It is illegal agreement. Now,
specified various factors due to which agreement may become considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness of the object and consideration of the contract, that is legality of the contract that makes it void. Now, difference between पे आएंगे void agreement and illegal agreement. Scope. Void agreement is not necessarily legal, but illegal agreements are all void. Nature. Void agreement not forbidden under law. Illegal forbidden under law. Punishment. Void में parties are not liable for any punishment under the law, but illegal में parties to illegal agreements are liable for punishment. कोई मर गया उसको punishment देंगे क्या? That is a void contract. but यहाँ पे अगर कोई kidnapping and all scene है तो उसको punishment मिलेगी. Collateral agreement. It is not necessary that agreements collateral to the void agreements may also be void. It may be valid also. तो मैंने जब आपसे ऑर्डर लिया था 100 kg मिठाई का, इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट बाद में फायर हो गया, यस इट बिकेम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब फायर रिलेटेड मान लो मेरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट समझता है, विल दैट आल्सो बिकम वॉइड? ऑब्वियसली नो, राइट, वो वैलिड रहेगा. So anything which is related to a void contract necessarily will not become void. Okay, so it is not necessary that agreements collateral to the void agreements may also be void. It may be valid also, but agreements collateral to the illegal agreements are always void. Collateral मतलब side contracts, they are always going to be void. Read the difference between once again फटाक से. Done? Read? Shall we go ahead? On the basis of, sorry, an unenforceable रह गया है. Unenforceable के लिए एक वर्ड बताना. टेक्निकल डिफेक्ट्स. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी तरीके के टेक्निकल डिफेक्ट्स है, then they are going to be unenforceable. Example? Sorry? Absence in writing. Barred by limitation and absence in writing. So these two examples are of unenforceable contracts. Barred by limitation मतलब any idea? Correct. मुझे एक इंसान से, मुझे एक डेटर से पैसा आने वाला है, यस, और आज पैसा आने वाला था बट नहीं आया. अब मैं रुकी, आएगा आएगा, ऐसे मैं 3 साल तक रुकी और उसके अगेंस्ट केस ही नहीं फाइल किया, क्या उसके बाद में केस फाइल कर पाऊंगी? सो दिस इज एज पर द लिमिटेशन एक्ट कि आपके पास 3 साल का ही टाइम होता है टू रिकवर योर डेट. आफ्टर दैट यू वोंट बी एबल टू रिकवर योर डेट. उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड, नॉट एग्जिस्टेंस ओनली. तो वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, बेसिकली कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी उस कॉन्ट्रैक्ट. सो योर एब्सेंस ऑफ राइटिंग और बार्ड बाय लिमिटेशन. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है या बार्ड बाय लिमिटेशन है, वो कैसा हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल. क्लियर है? देन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला, अच्छा पहले तो वंस अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी सारे वैलिड, अच्छे से याद रहेंगे ना. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ क्लियरली बताया गया है. दैट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ईदर बाय वर्ड स्पोकन और बाय वर्ड्स रिटन. यस, हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पूरा लिखा हुआ है सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे, दैट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. या फिर क्लियरली हमारा प्रॉपर डिस्कशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ए टू जेड सारी बातें कर ली है, दैट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, so a contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing. Section 9 of the act provides that if a proposal acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express.
Example, A tells B on the telephone that he offers to sell his house for rupees 2 lakh. तो ये क्या हो गया? Express contract. Clear है? Now, implied contracts without any words spoken or written. So when a person enters into a contract without any words spoken or written, it is called as an implied contract. One example, कूली. आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपके बैग्स है, वहां पर एक कूली आता है ना, वो कुछ बोलता है ना आप कुछ बोलते हो, वो बैग उठाता है और चलने लगता है. तो जब वो बैग लेकर पहुंचता है आपकी गाड़ी तक, क्या आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे? Yes. क्या हक रखता है वो उस पैसों पर? Yes. तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? Yes. Yes. तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. तो जब उसने आपके बैग्स उठाए, उसने आपको ऑफर दी कि आपको आपके बैग्स लेकर जाने हैं क्या? आपने जब कुछ नहीं बोला, मतलब आपने अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं देना था तो आपने रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया. सो दिस इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. और कोई एग्जांपल? tacit है, but still okay. ओके हाँ, तो आप गाड़ी पे रुक, आप सिग्नल पे रुक गए हो आपकी कार लेकर, वहां पे कोई आता है, गाड़ी पोंछने लग जाता है. यस, आप उसे बोल नहीं रहे हो, नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हो कि मत पोंछो, क्या आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे? यस. सो दीज ऑल आर योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. सो implied contracts in contrast come into existence by implication. So सिर्फ इतना लिख के आओगे कि without any words spoken or written, तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे. Make sure you're writing the words that are given there. So कोई भी simple content भी रहा तो वो भी पढ़ के जाना है. Okay, so came into existence by implication. Most often the implication is by law and or by action. So implication, ये वर्ड याद रखना है यहाँ पर. implied से ही वर्ड याद रखना, implication, and implication can be by law or actions. Section 9 of that contemplates such implied contracts when it lays down that insofar as such proposal acceptance is made otherwise than by words, the promise is said to have been implied. Section 9 ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, but as per the Indian Contract Act, if any contract is being entered into without any words spoken or written, it's implied contract. Example, where a coolie in a uniform picks up your baggage and to be carried out to the railway station without being asked by A, and A allows him to do so, it is an implied contract, and A must pay for the services of the coolie detailed by him. बिना एग्जाम्पल के आधे ही मार्क्स मिलेंगे. Make sure you're going to write the example. Next is tacit contract. Word tacit means silent. Word tacit means silent. The contracts which are silent. These are inferred through dash conduct of the parties. So these are inferred through conduct of the parties without any word spoken or written. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contracts. ये भी लिख के आना कि ये कोई अलग फॉर्म नहीं है, ये implied के ही स्कोप में आता है. And we had two examples here. Option ATM. जब आप ATM में जाते हो, yes, जब आप अपना कार्ड रखते हो, तो you're putting an offer that you want money. And जब वो पैसे निकाल के देते हैं, that's the acceptance that they are giving you the money. या फिर उल्टा भी ले सकते हो, जब आप ATM एंटर कर रहे हो, they are asking you, would you like to withdraw the money? And जब आप कार्ड देते हो, you are giving your acceptance. Yes. So here it is a tacit contract. कोई कुछ बोल रहा है क्या आपके साथ? नहीं. आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ नहीं नहीं. But by actions you are accepting the contract. Another example, entering the bus. अब बस स्टॉप पे खड़े हो, बस आती है, ऑफर देती है आपको, कहीं जाना है क्या? बोलती है क्या बस आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा? कुछ नहीं बोलती है ना? सो आप खुद होकर बैठ जाते हो ना? यस. सो दैट इज द ऑफर बाय द government department that would you like to use the transport services and go from place A to place B. When you are entering the bus, that means you are giving your acceptance, है ना? तो acceptance है, आप अंदर गए. This is a tacit contract. तो आपने किसी से कुछ बोला नहीं, should I come in, may I come in, कुछ नहीं, है ना? तो entering the bus is conduct of the party and that is a tacit contract.
How does tacit contract differentiate from the implied contract? So क्या बोला है last line? Not a Falls within the scope of implied contract. not a separate form of Not to separate the options. देना करना। तो यहाँ पे प्योरली कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के बेस पे इसीलिए कैमरा नाउ important star mark quasi contract quasi का मतलब अथर्व quasi का मतलब not a real contract. but law बनाता है. क्यों बातें कर रहे हैं? What happened? She wanted to give an example of of tacit contract. so you all are discussing that You know, quasi contract. So hurry up. Quasi contract का मतलब it is not a contract. Who creates it? Law creates the contract. Law creates rights and obligations with relation to this contract. Yes. So a quasi contract is not a actual contract, but it resembles a contract, just like a contract. इसलिए तो उसे quasi बोलते हैं, right? It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as, in other words, it is a contract in which there is no intention on part of either of the party to make a contract, but law imposes a contract on those parties. तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं 5 मार्क के लिए। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यस, नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल्स। तो ये वर्ड याद रखना, इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय whom? Created by law. And law gives what? Creates legal rights and obligations. No real contract exists. Therefore, it is known as quasi contracts. No intention of the parties to enter also. But law imposes. Example, finder of lost goods. अगर आपको किसी की पड़ी हुई चीज मिली है तो लॉ आप पे ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा। व्हाट विल बी दैट ऑब्लिगेशन? टू रिटर्न बैक दोस गुड्स टू द ट्रू ओनर। तो जो वो पड़ी हुई चीज है वो जिसकी भी है आपको उसे लौटाना है। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपके बीच में और उसके बीच में बना देगा और आप पे ऑब्लिगेशन डालेगा और सामने वाले पे राइट्स। दूसरा एग्जांपल, रिटर्निंग बैक द एक्सेस मनी। अर्नब दुकान में गया, कोई चीज खरीदी, 100 रुपए दिए, 20 रुपए की चीज थी या मान लो 50 रुपए की चीज थी, सामने वाले ने 70 रुपए वापस किए। यस, अर्नब खुश, बहुत खुश, निकल गया अर्नब। उसे वहीं पे लग रहा था और एक चॉकलेट ले लिया, बट उसको डर लग रहा था सामने वाले को समझ ना आए, इसलिए भाग गया वहां से। इसीलिए ऐसा चलेगा क्या? ऐसे केसेस में लॉ विल इम्पोज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑन यू। अब पूछना मत मैम उनको कहाँ से समझने वाला है और कहाँ से दिखने वाला है, नहीं, ये तो छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट अगर कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है तो लॉ विल क्रिएट ऑब्लिगेशन ऑन अर्नर टू रिटर्न बैक द मनी एंड एन ऑब्लिगेशन ऑन द शॉपकीपर टू टेक बैक द मनी। सो अगर गलती से उन्होंने ऐसा किया है तो शॉपकीपर हैज अ राइट टू टेक बैक हिज मनी। क्लियर? E-contracts. When a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contracts. It is in electronic contracts, different persons create networks which are linked to other networks through EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transactions using electronic modes. They are also known as EDI, cyber, mouse click contracts. सारा लिख के आना है, सिर्फ इतना मत लिख के आना कि it is done through electronic mode. No, people do these contracts with the help of networks that they create through
EDR, electronic data interchange, also known as cyber, mouse click, and EDR contracts. Clear? On the basis of performance of the contract. अब ये भी बहुत आया हुआ on the performance. एक इसमें दो ही है, one is executed and another is executory. Executed is which tense? Past tense. Already दोनों parties ने अपने अपने obligations कर लिए हैं complete. That is your executed contract. आपने मुझे फीस दी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, contract complete. That is the executed contract. Executory contract yet to be performed. आपने फीस दी है, but क्या मैंने अभी तक मेरा पढ़ाना complete हुआ नहीं है. That's the executory contract. अब executory में भी दो types हो सकते हैं, unilateral and bilateral. Unilateral का मतलब one party has completed the contract and other has not. Bilateral मतलब both are yet to perform. Both are yet to perform. दोनों side से performance outstanding. The consideration is given contract could be an act or forbearance. Could be an act or forbearance. अब यहीं पे क्योंकि ये वर्ड बहुत जन को याद नहीं रहता है, forbearance यहाँ लिखो. Act is to do something. Forbearance is not to do something. So if I pay you for not doing something, that is called as a forbearance contract. So executed में, like suppose मैंने आपको पैसे दिए कि अदब को पैसे दिए, वापस इस एरिया में आना भी मत, अपनी शक्ल मत दिखाना. अदब बोला मैम कितना दोगे, पहले वो बोले, मैंने बड़ी अमाउंट बोली, अर्नब खुश, यस अर्नब हो गया दुबई में सेटल, वापस अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा. करेक्ट? So this is executed contract because what he did is he has already performed. Yes, he's already performed his part of contract. So when he does not do what he has promised not to do, it is completed contract. Executory. In an executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are considered as executory contracts. So जो रिटर्न में देते हो वो आप प्रॉमिस देते हो सामने वाले को. तो सपोज आपने मुझे फीस दी, तो मैंने आपको क्या दिया रिटर्न में उस मोमेंट पे? एक प्रॉमिस. आई गिव अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस दैट आई विल टीच यू फॉर द कमिंग डेज. यस, सो दिस इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. तो सामने वाला उस टाइम पे कुछ कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, ही इज गिविंग अ प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ कंसिडरेशन कि वो कंसिडरेशन फ्यूचर में देगा. करेक्ट है? Unilateral or bilateral? Unilateral, one-sided contract where one party has performed his duty but the other is yet to perform, and bilateral when both the parties are yet to perform their contract. अब यूनिलैटरल का तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो. बायलैटरल का एग्जांपल कैसे दोगे आप? ओके, मोर. मान लो आज हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 10 दिन बाद नई बैच शुरू होने वाली है. यस, अभी मान लो आपने एक टोकन अमाउंट पे किया, 100 रुपए 200 रुपए. मैंने आपको मान लो एक कंफर्मेशन दे दिया, नोट्स दे दिए, चलो एक बुक दे दी नोट्स में से, और जब आप एडमिशन के दिन पर आओगे फुल फीस दोगे एंड देन आई विल गिव यू अ प्रॉमिस. सो दिस इज What a bilateral contract, wherein थोड़ा दोनों ने परफॉर्म किया बट दोनों का अभी भी बाकी है परफॉर्म करना. Got the point? Now, proposal or offer of the Indian Contract Act. Very important two elements: proposal and offer. Dash plus dash is an agreement. Offer plus acceptance. उसमें से पहला पार्ट इज ऑफर. ऑफर मींस आल्सो प्रपोजल. ठीक है? सो लेट्स सी एवरीथिंग अबाउट ऑफर. कैसा होना चाहिए, कौन सा ऑफर वैलिड होता है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, वो सारा हम देखेंगे. फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन.
चलो everybody. When a person One person refers to other willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining the asset of that इससे अच्छा बोल लेता लर्न हो जाता. याद है? नहीं चालू है. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something. Abstain? नहीं करना. Not to do something. To do or not to do something. Yes, when one person signifies his assent to either do or not to do something, anything with a view of obtaining the assent of the other. Such an act of abstinence is known as such an act and abstinence is known as proposal or offer. दोनों चलेगा. So यहाँ पर दो चीजें होनी चाहिए. पहला willingness होना चाहिए to do or not to do, और दूसरा intention of obtaining the assent of the other party. दोनों जरूरी है. सिर्फ एक होके चलेगा क्या? दोनों होना चाहिए. Yes. So willingness also and intention to obtain the assent of the other party also. सिर्फ willingness होके no use. तो अगर मैं जैगुआर के शोरूम में जाकर से बोलती हूँ मुझे जैगुआर बहुत पसंद है, मुझे एक जैगुआर खरीद, I wish I could buy a Jaguar. So this is my willingness. Yes. Is that an offer I'm giving them? No. No offer. If I go in the showroom and I say that I would like to buy the Jaguar car that you are selling, that's a offer. So here I want to buy also, and that is why I'm going and asking them that I want to buy, please sell it to me, right? So that is a offer. So mere statement of willingness is not a offer. दोनों होना चाहिए. So let's, what is the equation? Dash plus dash. Willingness plus intention to obtain the asset. Willingness to do or abstain from doing. To do or abstain from doing. So when one person signifies his willingness to do or to abstain from doing something with a view of obtaining assent of the other, such an act or abstinence is said to make, he is said to make a proposal. Clear? Essentials. पहला, जो proposal कर रहा है, he is called as a promisor और a offerer. जिसको कर रहा है उसे कहेंगे promisee या offeree. And जब सामने वाला उसे accept कर लेगा, he'll be called as a acceptor. तो सामने वाले का नाम बदलते रहेगा. Either अभी जब मैंने ऑफर डाला he is a promisee, जब वो accept कर लेगा he'll be a acceptor. Okay. For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. But mere expression of willingness does not constitute an offer. So if A tells B that he desires to marry by the end of 2017, it does not constitute an offer of marriage by A to B. To constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain assent of the other. Thus, in the above example, A further adds, "Will you marry me?" So now that is a offer. Samjha? Next. An offer may be dash or dash, positive or negative. Offer positive भी हो सकती है, negative भी हो सकता है. The positive offer means to do something. Negative offer means not to do something. Abstain from doing. Clear है सारा? Now, shall we go to kinds of offer? Yes. How many types of offer? 5 types. Which all? General offer, specific offer, gross offer, counter offer, and standing offer. Yes.
वन बाय वन सारा देखेंगे. पहला जनरल ऑफर. When the offer is made to public at large. Public at large and hence anyone can accept that offer. तो जब आप एक ऐसा ऑफर करते हो कि कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, that is a जनरल ऑफर. तो जब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बिकते हैं, दैट इज अ जनरल ऑफर बिकॉज इट्स अ open offer to all of the public that anybody can come and purchase the shares of the company. अब इसके लिए बहुत फेमस केस लॉ Cargill versus Smoke Ball Company. Let's see the case law. There was a lady called as Cargill. उस टाइम पे कौन सी डिजीज उनके एरिया में थी? इन्फ्लुएंजा. सबको इन्फ्लुएंजा हो रखा था. It was a epidemic kind of thing. अभी जैसा कोविड है वैसे उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा था. तो every company was in a search of a medicine to tackle this. तो वैसे ही एक कंपनी आई called as कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी. उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि हमारा मेडिसिन जो है स्मोक बॉल, वो कोई भी अगर कंज्यूम करेगा तो उनको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. राइट. So they give this advertisement in the newspaper. So kind of they are giving an offer to the public कि आओ हमारा मेडिसिन ट्राई करो और हम दावा देते हैं कि आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. और उसको और एड अप करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसी को हुआ तो हम आपको प्राइज मनी देंगे. ओके. तो हम आपको एक प्राइज मनी देंगे अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ तो. और उसे सब्सटैंशिएट करने के लिए उसने और कहा आगे कि हमने वो जो प्राइज मनी है ना वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल के रखा है कि कल को अगर सच में किसी को हुआ तो हम पक्का से उस बैंक अकाउंट में से आपको पैसे दे देंगे. तो और दावा मतलब और ट्रस्ट लाने के लिए ये कहा. अब कार्गिल उस लेडी ने वो स्मोक बॉल ट्राई किया बट उसके बावजूद उसे इन्फ्लुएंजा हो गया. मैडम चले गए मांगने आई वांट माय प्राइज मनी. क्या कहा कंपनी ने? दिस वाज जस्ट अ एडवर्टाइजमेंट स्टंट. पहला उन्होंने कहा दिस वाज जस्ट अ एडवर्टाइजमेंट स्टंट. ये कोई ऑफर नहीं था, हमें हमारा प्रोडक्ट पब्लिसाइज करना था इसीलिए हमने ये किया. अदरवाइज देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ डूइंग सो. अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दिस वाज नॉट अ एडवर्टाइजमेंट स्टंट. आपने जब कहा कि जो भी कंज्यूम करेगा और अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसे प्राइज मनी, दिस वाज अ प्योर ऑफर. दिस वाज अ जनरल ऑफर. एंड जब इस केस में एक्सेप्टेंस कैसा होगा? जब पब्लिक उसे कंज्यूम करेगी दैट विल बी अ एक्सेप्टेंस. तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस इज नॉट दिस वे कि पब्लिक आके आपको बोलेगी देखो हम गोली ले रहे हैं. ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं होगा. जब भी जिस मोमेंट कोई भी पब्लिक उसे कंज्यूम करेगी दैट विल बी एन एक्सेप्टेंस टू द offer and hence it was a valid contract because there was a valid offer. So your court said whenever such newspaper advertisements are given or any person gives such general offer to the entire public, it is called as general offer. And until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time and as it is a continuing offer. So general offer is also called as a continuing offer. Question आ सकता है explain continuing offer मतलब क्या explain करना है? General offer. Case law clear? Yes. Next case law. ललमन शुक्ला versus गौरी दत्त. अब क्या हुआ था इस केस में? ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में ललमन कौन है? गौरी दत्त एक ओनर नहीं बॉस है बेसिकली, जिसका एक नेफ्यू था. यस. और वो नेफ्यू वेंट मिसिंग, गुम हो गया. तो नेफ्यू को ढूंढने के लिए उसने ललमन को बुलाया, उसकी सर्वेंट को, और बोला जाओ प्लीज मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ. ललमन चला गया. अब गौरी दत्त डर गया था तो उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसे एक प्राइज मनी दूंगा. सो आई गिव हिम अ प्राइज मनी ऑफ ₹500 एग्जांपल. अब यहाँ पर ललमन ढूंढने गया था तो ललमन ढूंढ के लाता है उसके नेफ्यू को. अब 2 दिन बाद ललमन को समझ आता है कि गौरी दत्त ने ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसे 500 का प्राइस. अब चला जाता है ललमन. ऑब्वियसली 500 रुपए वाज अ बिग मनी एट दैट टाइम. और बोलता है गौरी दत्त को कि मैंने तो आपके नेफ्यू को ढूंढ लाया, आई वांट माय मनी. सो व्हाट डू यू थिंक? गौरी दत्त को देना पड़ेगा? क्यों? नो नॉलेज ऑफ.
तो जब ऑफर बताई गई थी, ललमन ने वो ऑफर, ललमन को उस ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं था, सो हाउ डिड ही एक्सेप्ट द ऑफर, है ना? अगर ऑफर पता होने के बाद मैं अगर ढूंढने जाती हूँ नेफ्यू को और लाती हूँ, देन दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, राइट? इसको ऑफर पता ही नहीं था, इसने पहले एक्सेप्टेंस किया और फिर ऑफर पड़ा, चलता है क्या? पहले ऑफर होना चाहिए फिर ही एक्सेप्टेंस, राइट? सो हियर देयर Lalman had no knowledge of the offer and hence it is not a valid. So having no knowledge of the offer, you cannot give acceptance to that offer. It was not a valid contract. So Lalman could not recover his money. Clear hai? Special or specific offer. When an offer is made to a specific person, a certain person, it is known as specific offer. And who can accept it? Only that specified person can accept it. कोई भी accept नहीं कर सकता. Yes. So if I'm giving an offer to one particular person, only that person can accept it. Nobody else can accept. Case law. Bolton versus Jones. Bolton कौन था? जिसने ब्रोकर से बिजनेस खरीदा था. So Bolton was a person जो एक बिजनेस करता था और जोन्स उसका रेगुलर कस्टमर था, राइट? बोल्टन ने थोड़े दिनों बाद अपना बिजनेस किसे बेच दिया? ब्रोकलहर्स्ट को. सो बोल्टन बेसिकली वाज अ सेलर. यहाँ पे नहीं, आगे है उसका रेफरेंस पूरा केस लॉ. सो बोल्टन वाज अ सेलर एंड जोन्स वाज अ सेलर अर्लियर. buyer of the business. Oh, sorry, got it. Sorry, so sorry. ब्रोकलहर्स्ट पहले सेलर था और जोन्स हमेशा किससे बाय करता था गुड्स? ब्रोकलहर्स्ट से. तो जोन्स जनरली हमेशा ब्रोकलहर्स्ट से ही गुड्स बाय करता था. थोड़े दिनों बाद ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस किसे बेच दिया? मिस्टर बोल्टन को. So now Bolton was the new seller, but Jones did not knew about this arrangement. उसने हर बार की तरह अपना ऑफर डाला किसे? ब्रोकलहर्स्ट को कि उसे इतने इतने गुड्स चाहिए. एक्सेप्ट किसने किया? बोल्टन ने. तो ऐसे टाइम पे जोन्स ने पैसे देने से मना कर दिया और गुड्स भी लेने से मना कर दिया. यहाँ पर बोल्टन ने केस फाइल किया जोन के अगेंस्ट से, ऐसे कैसे वो ऑफर मना कर, मतलब एक्सेप्टेंस मना कर सकता है मेरा. तो दैट टाइम द कोर्ट सेड कि जो जोन्स ने दिया था दैट वाज अ specific offer which should have been accepted by only by Brocklehurst and not by Bolton, because Jones had given an offer to Brocklehurst and not to Bolton. Cross offer. अब यहाँ पे जो important words है, when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer. So you need to remember I square. Identical offer in ignorance of each other's offer. So like suppose A और B दोनों साथ समुंदर पार बैठे हैं, तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है. Yes. A को पता है कि भी अब ये कौन सा टाइम है जब कम्युनिकेशंस पॉसिबल नहीं थे. आज के जमाने में होना थोड़ा मुश्किल है, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट स्टिल दिया है तो पढ़ेंगे. तो ऐसे अज्यूम करेंगे उस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था. यस. तो बी के पास मान लो 2 गाड़ियां है और ए इन गाड़ी को खरीदना चाहता है. ठीक है. तो ए बी को लेटर लिखता है कि मिस्टर बी आई वांट टू परचेज योर कार. मान लो कार ए, सॉरी कार ए नहीं बोल सकते, कार रेड वाली कार मैं आपसे परचेज करना चाहता हूँ फॉर ₹2 lakhs. ठीक है. तो इसने अभी लेटर भेजा है, अभी तक बी के पास वो लेटर पहुंचा नहीं है. अब बी को भी अपनी रेड कार बेचनी है और वो भी 2 लाख रुपए में ही बेचनी है. तो वो भी ए को लेटर भेजता है, वुड यू लाइक टू परचेज माय रेड कार फॉर ₹2 lakhs. उसे पता नहीं है कि ए को वो कार खरीदनी है. दिया ही क्यों है बुक में, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो उसे पता नहीं है कि ए को वो कार खरीदनी है. सो दिस इज अ क्रॉस ऑफर. दोनों तरफ से क्या हो रहा है? ऑफर्स आ रहे हैं. इम्प्रैक्टिकल है, बहुत इम्पॉसिबल है, बट स्टिल इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, हो भी सकता है, बट स्टिल
बी possibility. सेम कार के बारे में सेम प्राइस पे एक को बोल रहा है वुड यू लाइक टू परचेज माय कार. सो ये तभी पॉसिबल है जब रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है ना. तो जब यहाँ पर कम्युनिकेशन लैग है तो इन ignorance of each other's offers, when there are identical offers, same car same price, so when there are identical offers coming from both the sides of the parties, it is called as a cross offer. There is no binding contract in such case when the offer is, because the offer is made by, it cannot be treated as mutual acceptance. तो ऑफर ही है ये एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता. तो जस्ट बिकॉज ए ने भी वही ऑफर बोला है, बी ने भी वही ऑफर भेजा है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस होगा क्या? बाद में ए भी मना कर सकता है, बी भी मना कर सकता है, बिकॉज इट्स जस्ट अ ऑफर. ओके, तो ये अंडरलाइन करना. When two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such case. So I square explain करने के बाद आप ये explain करोगे. जब दो person एक दूसरे को offer डालते हैं, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract. Counter offer. One word for that, bargaining. Yes. तो जब आप बार्गेनिंग करने जाते हो तो यू पुट काउंटर ऑफर्स. यस, मान लो सेलर ने बोला ये बैग की प्राइस है 1000 रुपए, आपने कहा 200 रुपए से ज्यादा 1 रुपए भी नहीं देंगे. सो बायर ने ऑफर डाला 1000 रुपए में, वुड यू लाइक टू परचेज. आपने क्या ऑफर डाला? 200 में बेचोगे क्या? करेक्ट. सो दिस इज अ काउंटर ऑफर. सॉरी, हाँ, काउंटर ऑफर. सो सेलर का एक ऑफर आने के बाद जब बायर एक दूसरा ऑफर डालेगा, या फिर वाइस वर्सा, बायर का ऑफर आने के बाद जब सेलर एक दूसरा ऑफर डालेगा, दैट इज काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर लीड्स टू डैश Conditional acceptance. leads to conditional acceptance. Okay, more Revocation of cancellation or rejection of the first offer. Original offer. The first offer is no more into existence after the counter offer comes. तो इसका मतलब सेलर ने कहा वुड यू लाइक टू परचेज फॉर 1000, आपने कहा आई वुड नॉट गिव रुपीज 800, नॉट मोर देन, सॉरी 200 से ज्यादा 1 रुपए भी आई वॉन्ट गिव. सेलर ने कहा बाय, जाकर. यस, आप गए, आप निकल गए, वापस आए, ठीक है दे दो 1000 में. कैन द सेलर रिजेक्ट? यस, ही कैन रिजेक्ट योर ऑफर. बोल सकता है अब नहीं बेचना, चलेगा. यस, क्योंकि अब जो वो उसने ऑफर डाला था 1000 का, वो क्या हो चुका है? रिवोक हो चुका है. वो बोलेगा अब लेना है तो 2000 में, ऐसा भी वो बोल सकता है, राइट. सो वो ऑफर रिवोक हो जाता है. सो व्हेन द ऑफरी ऑफर्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस to the offer subject to modifications and variations in the terms of the original offer, he is said to make a counter offer. So counter offer is basically a qualified acceptance subject to modifications in the terms and contracts, terms and conditions of the contract or of the original offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. इसके वजह से original offer जो है वो खत्म हो जाता है, reject हो जाता है. It is also called as conditional acceptance. Qualified acceptance, conditional acceptance, rejection of original offer, सब कुछ mention करना तो ही marks मिलेंगे. Clear है? Standing or continuing or open offer. When the offer is allowed to remain open for a longer period of time, it is known as standing or continuing or open offer. Example, tenders. Okay, so tenders in a company. समझता है सबको क्या होता है? कंपनी जो है, मान लो मेरी कंपनी है, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है. यस, तो आई कीप ऑन फाइंडिंग सप्लायर्स जो मुझे कम से कम प्राइस में दे. यस, तो मान लो मेरी बड़ी कंपनी है, मैंने कहा दैट माय कंपनी इज ओपन फॉर टेंडर्स. इसका मतलब कि आप सब सप्लायर्स अपने अपने कोटेशंस भेजो एंड देन आई सिलेक्ट कौन से सप्लायर से बाय करना है. ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑफर मींस वेयरइन यू ऑल विल पुट योर ऑफर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो एक पीरियड होता है जिसके टाइम पे हर एक सप्लायर अपना टेंडर या कोटेशन भेज सकता है. ओके, सो दैट इज टेंडर्स that are invited for supply of goods is a kind of standing
यहाँ तक कोई डाउट? एवरीथिंग क्लियर? Hello. Okay, next point. Essentials of a valid offer. So once again, what are the different types of offers? General offer, specific offer, cross offer, counter offer, standard offer. याद रहेगा सारा अच्छे से. Okay. One minute, I'll just change the mic. तब तक next portion पढ़ना start कर. Start reading. Essentials of a valid offer. Start reading. पढ़ो. अथर्व आगे. चेतन ने जागा देते. Hello, hello. Hello. Ready? पढ़ा. ब्रेक का हुआ. अरे एक तो खत्म हो गई. 3 बजे से पहले कुछ नहीं. इसी लोग मत दो. Essentials of a valid offer. पहला essential, must be capable of creating a legal obligation, legal relation. ऑफर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सके, अदरवाइज दैट कैन नॉट बी अ वैलिड ऑफर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Like offer must be such as in law is capable of being accepted or giving rise to legal relationship. If offer does not intend to give a legal consequence and creating legal relation, it is not considered a valid offer in the eyes of law. A social invitation, even if accepted, does not create legal relations. अर्नब ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया. मैम आ जाओ, आई एम गोइंग टू कुक टुडे. कब से बोल रहा है कुक आई कुक, बट कुछ खिलाया नहीं आज तक. तो बोला फाइनली आई कुक टुडे. यस, मैं चली गई अर्नब के घर. देखा ये गायब, कहीं तो घूमने गया है. यस, अब मैं इतना इम्पोर्टेंट टाइम मैराथन छोड़ के इसके घर पे खाना खाने गई हूँ और ये गायब. Can I file a case? No. Because that was a social invitation, that was not a legal invitation. But मान लो मैंने अर्नब को कॉन्ट्रैक्ट दिया
कि मेरी स्टूडेंट्स की पार्टी है, कुछ तो अच्छा बना के ला, I'll pay you for that. Yes. अब सब बच्चे आ गए हैं, भूख लगी है सबको, अर्नब गायब. Can I file a case? Yes. I can file a case because here the intention was to create legal obligation. Okay. Next, it must be certain, definite, and not vague. तो जो भी ऑफर डाल रहे हो वो certain होना चाहिए, definite और not vague. Clarity होनी चाहिए आपके ऑफर में कि सच में क्या ऑफर पुट कर रहे हो. ठीक है. Example, the spare offers to sell B 100 quintals of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The offer is not capable of being accepted for the want of certainty. तो ऑफर जो है इट हैज टू बी क्लियर कि एग्जैक्टली क्या बेचना है. तो ऑयल्स हजारों टाइप्स के हैं, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसेम ऑयल, कौन सा ऑयल. बट सपोज इफ द सेलर डील्स ओनली इन वन टाइप ऑफ ऑयल दैट इज कोकोनट ऑयल और वो ऑफर डाल रहा है और उसकी कंपनी का नाम ही है कि एबीसी कोकोनट ऑयल फर्म या एबीसी कोकोनट ऑयल कंपनी, ऐसे केस में विल इट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग सर्टेन है ही उसके पास एक ही टाइप ऑफ ऑयल. बट जहाँ पे मल्टीपल ऑयल्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, यू नीड टू बी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू ऑफर. देन इट मस्ट बी वहां पे क्या अब ठीक है. आवाज चेक करो. ऑनलाइन स्टूडियोज क्या पता है. हमारे पे आ जाए, हमारे सबका आ जाए. अच्छा, अच्छा तो फेमस हो गया. अभी भी आवाज आ रही है? यश अभी भी एको हो रहा है? चेक करो. चेक. नहीं मैम अभी बराबर. अब आ रही है प्रॉपर्ली? यस मैम मत बोलो. यस मतलब समझ नहीं आ रहा. प्रॉपर है या नॉट प्रॉपर है सब. अब क्लियर आ रहा है क्या? मैम आ रहा है ना? आ रहा है ना बच्चों? कसं वाटतंय ते. सिद्धांत गावाला. सबको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? अच्छा, वापस अगर बैकग्राउंड नॉइज आए तो बता देना. हंसने का आवाज भी आ रहा है. अच्छा एक मिनट तो बस. मैम माइक सेंसिटिविटी कम कर दो. माइक सेंसिटिविटी कम कर दो. आपका आवाज मैम वो सर उसको माइक्रोफोन में चेंज कर देते हो. अभी भी आ रहा है आवाज में एको हो रहा है. तो क्या सर क्या है? उसको माइक्रोफोन चेंज करके कुछ. हाँ वही मैं चेक कर रही हूँ कहाँ पे वो ऑप्शन है. मैम ऑब्वियसली नहीं यूट्यूब पे जा रहा है. यूट्यूब का ऑप्शन है.
Give me 2 minutes. Read that till that time. We'll have questions of that. Hurry up, read it. Read essentials of the ballot offer. अनुराग यश इतने देर तक प्रॉपर आ रही थी क्या? अचानक से अब बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? या स्टार्ट से ही ऐसा था? ठंडा वाला पानी लाइए। जो भी ना पढ़ाई कर Okay. Guys, I'll create a new stream and you'll get a new link. Connect to that link. No other option. Okay. We'll create a new link.
कुछ